Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajveer, and in today's topic we are going to talk about the chapter Landscape of the Soul, which is fourth chapter of Hornbill book of 11th class. And in this chapter we will discuss about what art is. Dear friends, the name of this chapter is Landscape of the Soul, and the subtitle of this chapter is Ethics and Spirituality in Chinese Painting. But you must know about this whole chapter is divided into two parts. The first part is Landscape of the Soul, and second part is Getting Inside Outsider's Art. The chapter is written by Nathalie Trouveroy. Nathalie Trouveroy के बारे में चैप्टर से को समझने से पहले वी मस्ट नो अबाउट नेथली ट्रोरॉय. नेथली ट्रोरॉय है, इनके जो हस्बैंड है वो एक एम्बेसडर हैं. सो शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट सो मैनी कंट्रीज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हर विजिट शी ऑब्जर्व्स the art very minutely, and on the basis of these minute observations she makes out a spirituality of the art, and she shows the ethics in art. Now we discuss about this chapter. This chapter is divided into two parts: Landscape of the Soul, and the subtitle of this chapter is Ethics and Spirituality in Chinese Painting, and the second part, that is Getting Inside Outsider's Art. It is an article written in that was published in Hindustan Times, and it was written by Brinda Sri. Now we'll discuss about this Landscape of the Soul chapter. Landscape of the Soul, in the whole chapter you will see two types of paintings. First painting, that is about the Chinese painter, and the rest of the two stories are about the European painters. First story is about the Chinese painter, and second story is about the European painters. Now, landscape. What landscape is? I would like to make you aware about this scape. Scape is a type of scenery. Wherever you are standing, and from there, whatever you observe, that becomes the scenery of that particular place. For example, if you are standing on the roof, and whatever you observe, that becomes a roofscape. If you are standing on the land, and whatever observes, that becomes landscape. If you are standing on the hill, and you observe, it becomes a hillscape, that is scape. Now landscape, you will understand about the landscape, or in brief understanding you can take it that landscape is a type of painting. Here in this chapter, landscape is a painting, or landscape is a picture. You can make out this meaning in this lesson. So now we will discuss about this Chinese painting and Chinese painter. This Chinese paintings or Chinese painter's story is of 8th century. In 8th century, what happened? There is an emperor, and whose name is Zhuang Zhuang is an emperor, and he commissions a painting to be made to decorate the wall of his palace. And this work was handed over to a well-known painter, and whose name is Wu Daoji. Wu Daoji was the name of that painter. To the painting that was assigned to make was Wu Daoji. Wu Daoji was a well-known painter of 8th centuries, and he makes a painting. The painting was so splendid that he didn't want to show this painting to anyone except the king, Zhuang. So he hides his painting with the help of a curtain, and when Zhuang comes there, he shows his painting to a Zhuang, and Zhuang was impressed by the painting of that painter Wu Daoji, and he observes, Zhuang observes his paintings horizontally, vertically, from each and every point of
view. But at that moment, Wu Daoji says that John Jones, perhaps you haven't seen a cave in this painting, and Wu Daoji says that let me show you the view of the cave, and he claps, and as he claps, immediately after that, the way of the cave opens, and Wu Daoji enters the cave while saying that it is an extremely splendid cave, and let me show you this cave. But immediately after that, what happens? As Wu Daoji enters the cave, the way of the cave is closed, and the whole painting that was made by this Wu Daoji painter is disappeared, and there is even a single trace of his breast was not left behind. And at that moment, Zhuang Zhong was super stupefied. Zhuang Zhou was unable to understand what has happened. This Chinese painting is based on the concept. It is about the spirituality, it is about the ethics. So Chinese painting is about the spirituality, and here the spirituality means what? Spirituality means is this, that even a king can rule over his kingdom, but he cannot rule over the mind of the painter. He doesn't know the reality of the painting. He gets to know about the painting through Wu Daoji, and Wu Daoji is now disappeared forever. This is the first chapter, first story. And in second story, that is from Europe. Europe, and the name of the place is Flanders. In this story, what has been told? In this story, it has been told that there is a painter, and who doesn't want to make an eye on the painting of the dragon, which was made by himself. So he doesn't want to make the eye of a dragon. And do you know why? He wants to he thinks that if he makes an eye on the dragon, then it will fly. Particularly means he has a constant fear that his painting will disappear. That is the second story. And there is also a third story, and that third story is from Antwerp. Antwerp place. Antwerp place. And there is the name of a well-known painter whose name is Quentin Metzig. Now what happens in this third story? In this, Quentin Metzig is a blacksmith by profession, you can say, but he starts loving a girl, and whose father was a well-known painter. That painter doesn't want that his daughter should marry a blacksmith, and Quentin Metzig was a blacksmith. He doesn't want to see his son-in-law in such a profession, so he denies. Then what happens? One day, Quentin Metzig enters the studio of that painter, and he makes this Quentin Metzig painted a fly. He makes a fly on the canvas. When the painter enters his studio, he sees the fly, and what happens? He would like to sweat it out. He would like to remove the fly from his paintings. He would like to remove the fly from the canvas, but it was not the real fly. It was the fly which was made by Quentin Metzig, and that painter was really impressed by this art of Quentin Metzig, and he immediately accepts him his disciples. And later on, Quentin Metzig also marries the girl whom he loves. Now these are the three stories. Now on the basis of these three stories, you can find out that first story is about the Chinese, and second or third stories about the European paintings. And what is the difference now? What is the difference that we make out on the basis of these two stories? The first story is that is Chinese painting. In Chinese paintings, what we see, Chinese painting, the painting is the essence of inner life and spirit. Inner life and spirit. This Chinese painting shows the essence of inner life and
essence of inner life and spirit, inner life and spirit, essence of inner life and spirit, and it draws the people towards spirituality. अब कैसे essence of inner life and spirit है? अब चाइनीज पेंटिंग के अंदर क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन चाइनीज पेंटिंग? चाइनीज पेंटिंग के अंदर वू दाओ जी क्या करता है? एक क्लैप करता है, जैसे ही क्लैप करता है ही इमीडिएटली एंटर्स द इनर लाइफ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इनर लाइफ उस केव के अंदर एंट्री कर जाता है, उसके बाद उसका कोई साइन दिखाई नहीं देता, दैट इज अबाउट द एसेंस ऑफ इनर लाइफ। एंड इन सेकंड एंड थर्ड स्टोरीज व्हाट वी सी perfect illusions, you can say perfect illusions means कि जब इंसान भ्रम में फैल जाता है कि ही कैन नॉट मेक आउट व्हाट इज रियलिटी, दैट इज इल्यूजन। अब इल्यूजन कैसे है? इस थर्ड और सेकंड चैप्टर के अंदर, इन सेकंड चैप्टर के अंदर जो फ्लेंडर की है वो आंख नहीं बनाता, किस लिए? क्योंकि वो सोचता है कि वो जो उसके ड्रैगन है वो उड़ जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर चला जाएगा, यानी वो। और थर्ड चैप्टर के थर्ड जो स्टोरी है उसके अंदर क्या होता है? क्विंटन मैट्सिज है वो एक फ्लाई बना देता है, और उस फ्लाई क्या होती है? फ्लाई इज टोटली बेस्ड ऑन इल्यूजन्स। जब वो रियल पेंटर आता है उसका, तो वो देखता है और वो इल्यूजन में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है कि फ्लाई कहाँ से आ गई, और उसको वो भगाने की कोशिश करता है। तो क्या है, जो यूरोपियन पेंटिंग है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इल्यूजन्स, इल्यूजन के ऊपर, और फिगरेटिव है, मतलब एक डेकोरेटिव कह सकते हो आप, इट इज फिगरेटिव। दिस चाइनीज पेंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड इट इज इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट की दिखाती है, और जो यूरोपियन पेंटिंग है इट इज बेस्ड ऑन परफेक्ट इल्यूजन्स एंड इट इज अबाउट द फिगरेटिव, मतलब ये फिगरेटिव दिखाना चाहते हैं, यानी डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं। इन दोनों पेंटिंग्स में और क्या है, इसमें चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग में, यूरोपियन पेंटिंग के अंदर वट एवर द पेंटर हैज मेड, जो भी पेंटर ने बनाई है वो अपनी आंखों से देखना चाहता है कि वो जैसा उसको बना रहा है वैसा इसको देखिए। लेकिन जो चाइनीज पेंटिंग है वो चाइनीज पेंटर्स वांट्स टू एंटर हिज माइंड, कि उसके माइंड में घुसो और उसके बेस के ऊपर फाइंड आउट करो और वो बताओ कि क्या रियलिटी है। और जो यूरोपियन पेंटर्स हैं वो चाहते हैं कि जैसा उन्होंने बताया वैसा ही वो देखिए, यानी सेम वैसा का वैसा दिखाना चाहता है। ये जो थ्री स्टोरीज हैं, अब इसी थ्री स्टोरी में से जो चाइनीज पेंटिंग है दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, और इसी कॉन्सेप्ट को इस चाइनीज पेंटिंग के अंदर सेंसुई से डिफाइन किया गया है। चाइनीज पेंटिंग इज बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट, and that concept is based on sensory. That concept is based on sensory. जो हमने बताया कि चाइनीज पेंटिंग है ये कॉन्सेप्चुअल है, एंड कंसेप्चुअल है इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? सेंसुई है। सेंसुई मीन्स लिटरली, सेंसुई मीन्स क्या होता है? इट मीन्स माउंटेन वाटर। अब इन दोनों का वर्ड्स का अपना अपना अलग महत्व है। माउंटेन है उसको हम येंग से डिफाइन करेंगे, और वाटर है उसको हम यिन से डिफाइन करेंगे। ये चाइनीज कॉन्सेप्ट है सेंसुई का, जिसका लिटरली मीन्स होता है माउंटेन वाटर। माउंटेन इज हियर यांग एंड वाटर इज हियर यिन। एंड there is also a third concept in this Chinese painting, and that concept is middle weight. That is middle weight. Now we will discuss about this yang, yin and middle weight. Yang is mountain is masculine. It is stiff, warm and vertical, and it is going towards heaven. यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये माउंटेन है, ये मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट की तरह बताता है। वाटर इज ये क्या है? ये फ्लो में रहता है, फ्लूइड है और फेमिनिन है। ये फेमिनिन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी इसको हम रिसेप्टिव कहेंगे,
बिकॉज इट इज somehow बेस्ड टू फेमिनिन, ये फेमिनिन से बेस्ड है इसलिए इसको हम रिसेप्टिव कहेंगे। ये माउंटेन है, ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। अब इसी के साथ ही यानी इन जो दोनों का मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का जो इंट्रैक्शन है दैट बिकम्स द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अब जो थर्ड एलिमेंट है इसके अंदर वो है मिडल वॉइड। चाइनीज पेंटिंग के अंदर क्या दिखाया गया था कि चाइनीज पेंटिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द painting, and in this painting here is a picture, here is a picture, here is something mountain, water, trees, etc. But at the same time there is also a blank white space, that space is white। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी बना हुआ यहाँ पे नहीं है, दैट इज मिडल वॉइड। कहता है कि चाइनीज पेंटिंग के अंदर ये जो मिडल वॉइड है इट इज एज इंपॉर्टेंट एज द रियल पेंटिंग इज। कहते जो खाली जगह हमने छोड़ दी है उसका भी उतना ही रोल है जितना कि यहाँ जो पेंटिंग है उसका भी है। उसी इस जो ब्लैंक स्पेस है उसको हमने चाइनीज पेंटिंग के अंदर मिडल वॉइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस मिडल वॉइड को एक मेडिटेशन के जरिए बताने की कोशिश की गई कि मेडिटेशन में क्या होता है, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट और रिटेन द ब्रेथ। अब ये जो मिडल वॉइड है ये इज इक्वल टू रिटेन ऑफ ब्रेथ, रिटेन ऑफ ब्रेथ। चाइनीज पेंटिंग है, ये माउंटेन, वाटर और रिटेन ऑफ द ब्रेथ, और मिडल वॉइड है वो ये रिटेन ऑफ द वर्थ। इसको मेडिटेशन से क्यों कंपेयर किया गया है, ये कहता है कि जिस तरह से मेडिटेशन के अंदर सांस का लेना सांस का छोड़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सांस को रोक के रखना है। मेडिटेशन है वो सांस को रोक के रखे बिना पॉसिबल नहीं है। लाइक द सेम वे चाइनीज पेंटिंग भी मिडल वॉइड के बिना इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट उसको हम नहीं कह सकते। इसलिए मिडल वॉइड इज समहाउ रिलेटेड टू रिटेन ऑफ द breath in meditations. That is the concept of sensui. Now we will come to the second part of this chapter, that is getting inside outside's art. It is about the art breath. ये art breath के ऊपर है। art breath का मतलब है raw art. art breath means raw art, और इसका कॉन्सेप्ट है वो जीन ड्यूबेफिट फ्रांसिस आर्टिस्ट है जीन ड्यूबेफिट, उसने इस कॉन्सेप्ट को म्यूट किया था, इसको प्रोपाउंड किया था। और इसने जीन ड्यूबेफिट ने क्या बताया था कि तो होते हैं एक आर्टिस्ट जो एक ट्रेनिंग के तहत बनते हैं, और एक होते हैं आर्टिस्ट जो कलाकार बन जाते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, उसको आर्ट ब्रेथ के नाम से उसने डिफाइन किया था। अब ये कॉन्सेप्ट है ये 1942 के अंदर इसने दिया था जीन ड्यूबेफिट के अंदर। इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया था इसने, इस कॉन्सेप्ट में उसने बताया था कि एक वो आदमी जिसको कला की कोई ट्रेनिंग नहीं है बट इवन देन ही प्रोड्यूसेस ए ग्रेट और स्प्लेंडेड आर्ट दैट बिकम्स ए रो आर्ट, और गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर्स आर्ट, यानी आउटसाइडर्स आर्ट जिनका आर्ट से कोई लेना देना नहीं है बट इवन देन दे प्रोड्यूस ऐसी आर्ट कि जिस आर्ट का सलाम होता है, ऐसी आर्ट के बारे में ही उसने बताया था। इसमें उसने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। ये रॉक गार्डन जो नेक चंद ने बनाया था, इंडियन आर्टिस्ट नेक चंद। अब नेक चंद को ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग to be an artist, but even then he produces a heaven on this earth in form of rock garden. अब कहते हैं कि rock garden नेकचंद के द्वारा बनाया गया। नेकचंद doesn't have any kind of formal training to be an artist, but even then he produces a heaven like place in form of rock garden, and that becomes a considered example of outsiders art. In this chapter this is written about, यानी सिंपल से यही बताया गया कि जो आदमी जिसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है बट इवन देन ही प्रोड्यूसेस ए स्प्लेंडेड आर्ट, दैट इज एन आउटसाइडर्स आर्ट। आउटसाइडर्स मीन्स जिनका आर्ट से कोई लेना देना, वो आउटसाइडर्स है बट इवन देन दे प्रोड्यूस समथिंग बेटर और समथिंग फैंटास्टिक। और इसमें एग्जांपल के तौर पे लिया गया रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ का है, नेकचंद ने जिसको बनाया था। एंड दैट इज अबाउट दिस चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। थैंक यू।